गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई जस्ट होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बैकड्रॉप आइडिया शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ले लेंगे फोटोग्राफी बैकड्रॉप। अगर आपके पास नहीं है तो आप वॉल पे ही जो कर्टन रॉड होती है वो आप फिक्स कर लें। आप ले लें फोम बोर्ड, थर्मोकोल या फिर फ्लोरल ब्रिक्स। तो सबसे पहले आप फोम बोर्ड का मेजरमेंट लेके उसको कट कर लें। फिर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले लें या फिर रियल फ्लावर्स ले लें अपने चॉइस के। फोम बोर्ड जो आपने कट किया होगा उसके 4 कॉर्नर्स पे ऐसे आप होल बना लें ताकि आपको हैंग करने के टाइम आप रिबन इसमें या फिर थ्रेड के साथ आप इसको हैंग कर सकें। फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी विश के हिसाब से जैसे इसे अरेंज करना चाहते हैं, स्टार्ट अरेंजिंग इट ऑन द फोम बोर्ड। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनका पीछे स्टेम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी वुडन स्टिक ले लें या डॉबल स्टिक ले लें। मैंने यहाँ पे ब्रूम स्टिक यूज़ किया है टू मेक इट एज अ स्टेम, ताकि मैं इसको फिक्स कर सकूँ फोम बोर्ड पे लाइक दिस। जो मैंने जो 4 कॉर्नर्स पे होल्स बनाए थे उसमें मैंने थ्रेड इंसर्ट कर दिया है। आप चाहे तो रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस एम्प्टी लग रही है तो आप और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने जैसे ये बेल्स ली हैं और थ्रेड की हेल्प से इसको हैंग किया है विद टेप। एंड वोला, इट्स कंप्लीट।
दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।